afternoon, everyone. Myself, Hitesh Jangit from Mumbai Support, and today's topic is trend analysis with central pivot train. So, we'll see today what is CPR and how to make a technical query for narrow CPR, and then how to find out a intraday stock. So, let's see. Let's start. Before that, I'll present you a shairi, and the shairi is स्टॉक मार्केट में सही ट्रेड लेना है कमाल स्टॉक मार्केट में सही ट्रेड लेना है कमाल तभी तो होगा अपनी जिंदगी में धमाल तभी तो होगा अपनी जिंदगी में धमाल स्पाइडर के बिना ना होगा ये कमाल स्पाइडर के बिना ना होगा ये कमाल हम सब साथ चलेंगे तभी तो होगा मार्केट में धमाल सो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक दैट फर्स्ट व्हाट इज CPR as we know CPR is a central pivot range. It's a kind of a pivot indicator where we use for our supply and demand zone. So, central pivot is a pivot indicator to identify key price level that is used by traders for intraday market movement. So, बोलने का खाली यही मतलब है कि CPR एक pivot indicator है जहां पर आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मिलेगा और अगर आपका स्टॉक अगर रेजिस्टेंस के ऊपर है तो वो बुलिश स्टॉक है उसके अंदर बुलिश सेंटिमेंट है अगर वो स्टॉक सपोर्ट के नीचे है तो वो एक बेरिश सेंटिमेंट का इंडिकेशन है सो सेंट्रल पिवट रेंज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ previous day high low and close and the bullish sentiment is when price is above top central pivot point and bearish sentiment is when price is below the bottom central pivot point. Okay, so this is an indicator and we can plot on spider intraday and intraday chart. Okay, and when we talk about pivot points, so basically when price is at the resistance, so we can say as that price reach up to a supply point. And in pivots, when price reach to the lower level, which we say as a support, so which defined as a demand point. So we'll go to our software. Okay, you can see this is a pivot point. Okay, so for setting this pivot, different pivot points, for that you have to right click on the chart and then you have to go to chart settings. When you go to chart settings, you have to go to pivot points. Yeah, this is a pivot, and in that you have pivot type. So you can see I have selected this is a central one, which means it's a central point. So you can see in this slide we have different pivot points. So you can see this is 00, which is a classic 4, 01 is a Cambrilla, 02 is a Fibo 1. So in this way we have multiple pivots, and at the end you can see there is a number which define that this pivot point is having that upper level and that lower level. Like you can see here, this is a Raje 3. Raje 3 means it's having 3 resistance and 3 supports. In central, you can see in central there is a 1, which means it has only one resistance and only one support. So here, whenever we make a query, so we need to understand which pivot point we wanted to select. So in that, I have selected, you can see pivot type is central 1. You can see this is a multiple of pivot points and I have selected the central one. And I have selected the show pivot lines so that it will display with the help of shortcut Control G. So I can enable and I also can disable. So pivot में जो अलग जो pivots है वहां पर सेंट्रल पिवट नाम का एक पिवट है जहां पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट आपको मिलेगा जिसके थ्रू हम जो स्टॉक्स के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे. तो अब आते हैं डायरेक्टली कि अगर सीपीआर है जिसको हम यूज करते हैं अगर इंट्राडे के लिए तो जनरली हमें कहा जाता है कि अगर वो पिवट जो है उसका जो रेंज अगर वो नैरो है
So उसके chances है कि वो उस दिन अच्छा perform कर सकता है. So when we say the narrow CPR, which means a resistance and the support is very close to each other. So we can say as that stock will move positive or negative with a strong impulse move. So आज हम यहाँ देखेंगे कि how to make a technical query of narrow CPR. That will be in three conditions. Okay, with the help of only three conditions, we can make a technical query for narrow CPR. So first I have to go to the query, and then I have to go to the technical query. Okay, and here I have to select the technical query. I have already preloaded my condition. Okay, but I'll show you how to make this technical query. First, for running this narrow CPR query, you have to add chart period as a daily. We cannot use this on an intraday, because on the comparison of the previous day only, this narrow CPR is calculated. So when we use the technical query, we have to use the period as a daily. Second thing, this query we run only after 9:15. जब भी मार्केट का डे का फर्स्ट पिक आ गया है, उसके बाद आप रन करोगे तो आपको ये जो है वो ऑटोमेटिकली शो होगा कि आपके जो सीपीआर के कौन से स्टॉक्स है जो फुलफिल किए हैं. सो व्हेन वी रन आफ्टर 9:15 विल गेट द रिजल्ट्स. सो अब यहाँ पे बात आती है कि हमें पिवट पॉइंट कौन सा चूज करना है. So for that we have to go to a technical query, and here we have to double click on the conditions, and then we have to go to pivot. Okay, here you can see this is the pivot level. In that, when we have to click on the parameters, and here you can see it's a project. So we always need to select project 1. Okay, and in pivot type, when we click on the pivot type, we have to indicate the specific pivot number. So in this, you can see the central pivot is 8. So we have to choose pivot type as a 8. And in level, we have to choose 1, because in central there is only one resistance and one support. So I have to choose level 1. And here you have to choose a daily. Okay. So now the second part is condition. So in which condition we have to use this pivot. Okay. So for that, when I double click on this, so I know a pivot can be falling as compared to previous day, or it may be rising as compared to previous day, because there is only two possibility to comparing current pivot as well as the previous pivot. या फिर वो करंट डे का जो पीवट है वो कल कल के पीवट के कंपैरिजन के हिसाब से ऊपर होगा या फिर नीचे होगा. दो ही पॉसिबिलिटी है. तो हमने वही कंडीशन यहाँ पर ऐड की है. यू कैन सी आई हैव एडेड अप हियर rising from last n bars, which means I have choose first falling from last n bar, which means I'm comparing today's pivot is falling as compared to previous day pivot. Previous day pivot. So, okay, so this is the one condition. And on the second condition, I choose pivot, which is rising for last n bars, which means current day pivot is rising as compared to the previous day. So यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमें मिल गई है. बट अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टॉक है जहां पर नैरो सीपीआर बना है. नैरो मीन्स वी आर कंपेयरिंग विद अ pivot that resistance will be very close to pivot. So narrow CPR के लिए we have to add one more condition, which is above average by X percentage. अब ये कहाँ पर है? So for that we have to add condition, and we have to go to average two line to input. You can see here average two line to input, which means we can add two lines with two different inputs. Like when we play a game in Rummy, okay, so we have to maintain a sequence. But if you don't have a sequence, like suppose I have to maintain a sequence of 5, 6, and 7. But if I don't have,
a number 6. So instead of that, what I can do, I can add a joker in that. So that will work as a number 6. So like that same way in our software, if you want to compare any two indicator with the same subgraph, I repeat, if you want to compare any two indicator with the same subgraph, so that you can use this condition where we change the input. So I have to click on this and go to parameter as a daily, and then you have to go to the condition. So here I will choose above average or last n bar. Okay, and in that you can see at the below above average by X percentage. But if you want to compare that your current resistance is above a certain level, so you can use this condition. But here I'll use this condition because I will contradict my condition. Like I have choose above average by X percentage. So in that I have to choose 0.03 to get a narrow CPR. You can see I have choose 0.03 so that pivot और resistance दोनों आपस में close मिले मुझे. Okay, then once I added this, I have to click over here and I have to go to here. You can see here the change input condition is there. Change input. So I have to click on change input. First, I have to select that condition. Then I have to go to change input. You can see I have compared two different conditions because I wanted to compare pivot with resistance. So here I have added those conditions. There is multiple of conditions. Okay, which if suppose you wanted to compare any two indicators, the first you have to add those indicators in the same time frame. If you are adding a daily time frame and if you wanted to make a query on a weekly, so it will not work because when you change any indicators input, you need the same time frame. So हम जब ये कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन है जहाँ पर हमें दो इंडिकेटर कंपेयर किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं एवरेज टू लाइन टू इनपुट. उसमें आपको जाना है यहाँ पर कंडीशन में और वहां पर एक ऑप्शन है अबव एवरेज बाय एक्स परसेंटेज. इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी टू इंडिकेटर को कंपेयर कर सकते हो और उसके सामने एक सर्टेन लेवल तक वो ऊपर होना चाहिए. तो यहाँ पर आके मैंने चेंज इनपुट किया और यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस और पिवट को कंपेयर किया. यहाँ पर मैंने चूज किया. अब इससे जब मैंने रिलेशन बनाया, जो फाइनल जो हमारा काम है, when I put into a relation, when I arrange into a relation, तो मैंने क्या किया, I have to choose condition 1 और condition 2. मुझे पता है कि अगर मैं प्रीवियस के साथ कंपेयर करता हूँ पिवट को, तो या फिर वो राइजिंग में हो सकता है या फिर वो फॉलिंग में हो सकता है. बराबर. तो इसके लिए मुझे दोनों भी चलेगा. मुझे बस खाली पता ये लगना चाहिए कि वो नैरो होना चाहिए. So if I want to run this query, I only need a candle having a narrow CPR. Okay. So for that, I have it might be in a rising or it might be in a falling. So I have choose condition 1 or condition 2. और जो मैंने थर्ड कंडीशन यूज किया है डेली एवरेज विच इज अबाउ 0.03, मैंने उसको दे दिया एंड नॉट C3. उसका मतलब है कि मुझे उसके ऊपर वाले जो लेवल्स है मुझे उसके स्टॉक से नहीं चाहिए. मुझे चाहिए कि जो स्टॉक अपने पीवट से 0.03 के अंदर अंदर हो, वो चीज मुझे मिलने चाहिए. सो आई गिव अ रिलेशन C1 और C2 एंड नॉट C3. इससे क्या होगा ना कि हमारे जो नैरो जो स्टॉक्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे. सो व्हेन आई रन दिस इन अ लाइव मार्केट और मे बी इन एन एक्शन प्ले, बट वो उसी दिन होना चाहिए. सो इफ आई रन ऑन दिस बिकॉज आई ऑलरेडी रन द एक्शन प्ले, और अब देखो अभी मैंने करंटली ये रन हो रहा है एंड आई हैव चूज अ रेट 100 till 10,000. तो इसके बीच में ही मिलेगा. अब ये सब रन करने के बाद अब वो हमें रिजल्ट शो करेगा. तो यू कैन सी these are the CPR stocks for 18th. So if I click on Adani, you can see एक ही लेवल है जहां पे बहुत क्लोज है रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड पिवट. देन यू कैन सी द अशोक भी ऑलमोस्ट क्लोज है, एक ही लेवल है. बजाज फाइनेंस यू कैन सी हियर it's a narrow CPR. So this is how we can find out the stocks for narrow CPR. Okay, it's a simple condition. It's a 3-line condition, but the only thing is we need to
make a relation proper. Okay, so this is the part one. This is the part one of the webinar where we made a condition to finding out a CPR stocks. Okay, जहां पर एक narrow range बना हुआ है इंट्राडे के लिए. Now I have to save this group to move filter for intraday. अब यहाँ पे क्या होगा कि हम जब इसको सेव करेंगे देन वही ग्रुप में हम अपनी दूसरी कंडीशन इंट्राडे कंडीशन हम ऐड करेंगे. इससे क्या होगा ना कि हम उन्हीं स्टॉक्स में सिलेक्टेड ट्रेड कर सकते हैं. सो फॉर दैट first I have to save this group. So when I click on save, it will ask me to give a name. So I can give 18th November 2021. Okay, and at the last I can give CPR, and then I click OK. Now when you press G on the chart, you will get this stock. You can see this is 18 November 2021 CPR stock. So this will get in a group. So you can use two way, like you can open a price watch. You can go to repos, you can open price watch, and you can click on that, and you can open CPR group. So indirectly you can click on each and every stock, and you can monitor every stocks of that group for that particular day. तो हम ये सीपीआर में भी सीपीआर के जो स्टॉक्स है उसका हम प्राइस वॉच में भी ओपन कर सकते हैं, ताकि अगर आपको मैनुअली भी देखना है तो हम उसके अंदर चेक कर सकते हैं. ओके, सो ये था हमारा पार्ट वन, वेयर हाउ वी फाइंड आउट अ सीपीआर स्टॉक्स थ्रू आवर टेक्निकल क्वेरी. इट्स अ सिंपल टेक्निकल क्वेरी, इट्स अ 3 लाइन टेक्निकल क्वेरी. एंड सपोज अगर आपको और ज्यादा चाहिए, सो यू कैन डबल क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन क्लिक ऑन 005 or 010. Okay, you can click 0.5 or 0.10, so it automatically gives you more result because वो range और खुल जाएगा. So yeah, so you can use this to finding out stocks for intraday. अब ये ग्रुप हम यूज करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए. अब ट्रेडिंग का रूल्स क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सो आई टोल्ड यू कि हमें ये रन करना है आफ्टर 9:15 एंड टाइम फ्रेम विल बी द डेली. ओके, ये हो गया हमारा नैरो सीपीआर क्वेरी. नाउ अब जो भी हमें स्टॉक्स मिला है उसे हमें ट्रेड कैसा करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन क्वेरी, हियर टाइम फ्रेम शुड बी द 15 मिनट्स. सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर में टाइम फ्रेम कर लिया 15 मिनट्स में. क्योंकि 15 मिनट्स मैंने टाइम फ्रेम कर लिया, जो स्टॉक्स नैरो सीपीआर वाला रहेंगे हम खाली उन्हीं को टारगेट करेंगे. ओके, आई एम कैंसिलिंग दिस क्वेरी एंड अब मैं यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी में दूसरा टेक्निकल क्वेरी ओपन कर रहा हूँ. Okay, which I already put my all the conditions for intraday, and I can change this group. ये मैं चेंज कर देता हूँ, और ये मैंने स्पेशली किस लिए बनाया, 18 नवंबर 2021 सीपीआर के स्टॉक्स है. ओके, so I can use this. So after this, first time frame will be the 15 minutes, and then we have to run technical query after 9:30. Reason क्या है? Because I have written over here run after 9:30 till 2:15. Because जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले 15 मिनट मार्केट को क्लोज होने दो. 9:30 के बाद से जो भी रिजल्ट आएंगे आप उसको टारगेट कर सकते हो. एंड हमेशा हमें ये रन करना है आफ्टर 15 मिनट्स क्लोजिंग रेट, बिकॉज लाइव मार्केट में ट्रेड आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे प्रॉब्लम हो सकती है स्टॉक सिलेक्शन के लिए. सो हम हमेशा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से विल टेक द स्टॉक सिलेक्शन. तो पहला जो हमें स्टॉक मिलेगा वो 9:30 को मिलेगा. हर 15 मिनट के बाद हमें रिजल्ट मिलते रहेंगे, लेकिन टिल 2:15, बिकॉज हमें टाइम चाहिए. अगर अगर आपने कोई ट्रेड किया एट 2 और 2:15, सो इट शुड एटलीस्ट हैव 1 आवर टू फुलफिल योर टारगेट और मे बी योर स्टॉप लॉस, जो भी कंडीशन है, बट उसका टाइम चाहिए रहेगा. सो दैट्स रीजन आई हैव एडेड दैट वी शुड ट्रेड टिल 2:15. अब इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए कंडीशन क्या है?
सो बुलिश ट्रेंड के लिए कंडीशन है, सबसे पहला चीज, आपका जो भी कैंडल हो वो प्रीवियस डे हाई क्रॉस करना चाहिए या फिर प्रीवियस डे लो क्रॉस करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ये अगर आप देखो करंटली ये कैंडल प्रीवियस डे लो क्रॉस कर रहा है, सो ये हमारी बेरिश कंडीशन रहेगी। वैसे अगर आपको कोई प्रीवियस डे हाई क्रॉस करेगा, जैसे एग्जांपल यू कैन सी ये है दिस कंडीशन, कैंडल इज क्रॉसिंग प्रीवियस डे हाई, तो ये बुलिश कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन शुड बी अ कैंडल शुड क्रॉस प्रीवियस डे हाई। सेकंड कंडीशन, स्टॉक शुड बी एट डे हाई। अब जो कैंडल क्रॉस कर रहा है, यू कैन सी इन दिस कैंडल दिस स्टॉक हाई इज एट डे हाई, उस वक्त के लिए। ओके, सो जो भी कैंडल होगा वो डे हाई पे भी होना चाहिए, उसी कैंडल का हाई होना चाहिए या फिर क्लोज होना चाहिए, दोनों भी चलेगा, बट हाई डे हाई पे होना चाहिए टू गेट परफेक्ट मोमेंटम फॉर द स्टॉक्स। ओके, वो होना चाहिए। देन थर्ड कंडीशन इज ओपन लो और क्लोज इक्वल्स टू हाई। अब यहाँ पे जो भी कैंडल आप चूज करोगे, वो पर्टिकुलर कैंडल जो क्रॉस कर रही है वो ओपन हाई होने चाहिए या ओपन लो होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, इफ आई क्लिक ऑन मेरिको, okay, so yeah, we are discussing about the bullish condition, right? So okay, ये प्रीवियस डे का कंडीशन है जहां पर स्टॉक क्रॉस्ड प्रीवियस डे हाई, इट वाज अ डे हाई एज वेल एज दैट कैंडल ओपन इक्वल्स टू लो। सो कैंडल ओपन हाई हो सकता है या ओपन लो हो सकता है, एनी वन कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। ओके, फोर्थ कंडीशन, कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग नॉट बोरिंग कैंडल, विच मीन्स आपका जो कैंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, क्योंकि बोरिंग कैंडल होता है हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ वीक कैंडल। सो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा सो इट विल एक्ट स्ट्रांगली, सो वी हैव टू यूज दिस कंडीशन, a candle should be strong not boring candle। and fifth condition is stock should be above 100-day adaptive moving average। so first, how to add this adaptive moving average? So when you right click on the chart or you can press S, you have to go to averages here. Okay, when you click on this averages, you have to click on the parameters and you have to choose the average type. So here you can use A for adaptive moving average, and here you can use average period as 100, and then you can select all time frame. Okay, so I have added adaptive moving average. So a candle should be above the 100-day adaptive moving average. So now this will show you that yes, this stock has the maximum probability for bullish trend. So this will act as a bullish trend. So here, अब question आता है कि where we have to take a trade. So if you got such kind of a condition in a technical query, so whenever that candle's high break, you can take entry. Okay, so you can when I click on this, this is yesterday, day before yesterday. This is 17th November script, and this is Tata Power, and you can see at 9:45 this stock crossed previous day high. This stock is having open equals to low, and also this stock is not a boring candle. Stock is a day high, and also this is above the 100-day adaptive moving average. So this candle satisfy all our conditions. So whenever this candle's high break, we can take an entry. So you can see this high is at 249.35. Okay. So whenever this high breaks, we will take an entry, and we'll take this candle low as a stop loss. This candle low will act as a stop loss. So you can see the difference is from high to low. It's a 3.75 paisa. Okay, which means 3.75 points. So we'll wait at least for 3.75 points for intraday, at least. Later, we'll wait till 3:15. If someone is ready to trail, he can wait till 3:15. But if someone wanted to book profit, who is not so patient,
then I can say you can take 3.75 and you can exit from this trade. Okay, so this is the bullish condition where we have to satisfy all the conditions, and according to that, we have to take risk and reward. Okay, so this is the bullish condition. Now we go through the bearish trend. So the condition is candle should close below previous day low. Like we saw in Marico, candle is crossing previous day low. Okay, and when you see stock should be at day low. So you can see at the same time when you see this candle crosses this stocks, this candle's low is at day's low. So this shows that this stock is at bearish trend. Now again you can see open high or close equals to low, which means your candle should be open high or it should complete with a close equals to low, which means both are in a both are for bearish conditions. So this is the third condition. The fourth condition is candle should be strong, not boring candle. The same way as the bullish trend, candle should be strong. You can see this is not a boring candle. This is boring candle. Those who don't know about boring candle, I'll repeat the condition. Boring candle are those candles which are having less than 50% of the body of that particular range. जैसे example, अगर एक candle का high low का body अगर less than 50% है, तो वो कैंडल है वो वीक कैंडल है जिसे हम कहते हैं बोरिंग कैंडल. Okay, so you can see if a candle is boring, you will get a gray this part in the body. So I can see this is a strong candle. So it satisfies the fourth condition as well. And the fifth condition is stock should be below 100 adaptive moving average. So at the same time, you can see this stock is crossing, this candle is crossing 100-day adapting moving average. So this satisfies all the five conditions. Now, whenever this candle's low break, you can see it low breaks at 545.40 paisa. Okay, when this low breaks, I'll take a short entry. You can see this is a long candle, but when you click on that candle, I get the difference is a 6.25 paisa, which means this candle's high to low is 6.25 paisa. So when I calculate with the stocks, because I always prefer a stop loss should be near to 1%. Okay, so you can see. So what I can do, I'll take entry at this level, 545.40 paisa, and I take exit 5 rupees as a stop loss, or maybe 5.5 paisa, so that whenever you enter, you can take a entry and you can take profit of whatever the 5 or 6 rupees, whatever you are taking a risk reward. First, you have to try to take 1:1. Reason? Because you should book at least 1:1. Later, if you are trading in a two lot, then you can trail it. But first, try to get profit out of the market so that you will build a confidence. Okay, so अब यहाँ से जब वो stock गया है, you can see that stock moved from 45 till 39. Okay, so we can exit from here, and I also added a weekly pivots. Okay, you can also add by pressing right click. You can go to add study, and here when you press P, this is a pivot. Okay, so you can see this is a pivot monthly resistance, pivot level, monthly support, weekly resistance, and weekly support. So I have already added both the pivots, monthly and weekly, so that will give me a support or a demand zone on the monthly and weekly basis. So here you can see clearly it's having a weekly and also monthly support. So I'll take an entry over here. I can exit at 539, and this stock moved till 536. Okay, so if you get 1:1, you can get it the profit, and if you wanted to trail, you can trail, or you can wait till 3:15. It totally depend on you that how much risk you wanted to take from the market. In the same way, you know where this stock will move. So according to that, you can trade in equity, you can trade in options as well, you can trade in futures as well. Because in all the three segments, all the two segments, you know
that we only need the direction, and with the help of this query, you will get the direction. Okay, so this is the bearish condition. So now we'll see the examples. I already saw these two examples, Marico and Tata Power, but still we'll again see Marico. You can see this is the Marico. This moved from here to here. So we easily got 1:1 risk reward. Okay. Now the second condition, the second stock is PVR. I think it's PVR. So when I click on PVR, I go to cash. Okay. So you can see this candle at 10:15. This candle fulfill all the conditions. You can see this candle is at day low. Okay. It's also a strong candle. It's below the adaptive moving average, and it's also crossing previous day low. तो सारी कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल हो रही है जो भी हमने अभी देखी थी इंट्राडे के लिए. अब जैसे उसका लो ब्रेक हुआ, वी कैन टेक एन एंट्री. यस, अब ये एंट्री में हमें नुकसान भी हो सकता था, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे मंथली एंड वीकली हमें यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई ना कोई दिख रहा है, बिकॉज यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है. अब मैं जब इसको बड़ा कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वीकली सपोर्ट था और यहाँ पर ये मुझे मंथली पीवट भी है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये शायद ट्रेड सक्सेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ओके, बट अगर हमने रिस्क रिवॉर्ड देखा है, जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं दिख रहा हूँ 18 रुपया दिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो ऑफ द कैंडल, व्हेन दिस लो ब्रेक्स वी कैन टेक एन एंट्री. सो 1687.60 जो है, अगर सपोज हमने एंट्री ली है 1687 पे, ओके, तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट 18 रुपया तो निकालना ही है. So यहाँ से we'll wait for 1:1, at least for 1:1. यहाँ से you can see this is 87 and we want 20 rupees. This is a 67. So we easily get over here in this candle. We'll exit from here. अब जिसको ट्रेल करना है, he can trail to cost. जैसे cost to cost पे you can exit. Okay, so एक example था. So here this candle gives proper risk reward, and if someone who waited for 1:1 will easily book the profit. Now Tata Power. Okay, this is yesterday's day before yesterday, 17th. This is 17th candle, and as I told you, this candle fulfill all the conditions. You can see at the high, the entry point is 249.40 paisa, and the low is 245.60 paisa, which means it's almost 3.75 rupees. And if I wanted to wait, so I have to at least take 3 rupees, 3.75. Okay, so 249 पे entry लिया and high made 252. Okay, but this stock doesn't fulfill our 3.75 condition, so we'll wait till 315, and जो भी 315 का rate होगा, we have to accept that. So closing rate is 250. Okay, so from here we got only the 70 paisa, so we have to accept it. We have no other option. If you carry the stock, I think it will maybe perform tomorrow, but I don't believe to carry the stocks, because we are totally trying for the intraday, and with the concept of intraday, and if you're moving that stock for the very next day, I think that will not good for your trading rules. So I'll suggest exit from that day only. Now the Bandhan Bank, you can see in Bandhan Bank, I have written sell CNS, which means condition not satisfied. Okay, so this is the Bandhan Bank. Okay, now you can see this is a yesterday's, this candle satisfy all the condition except 100-day adaptive moving average. So this we known as a condition not satisfied, because it's not satisfy all the 5 conditions.
it satisfies only all the four condition. So अगर जहाँ पे पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है वो स्टॉक्स हमें ट्रेड करना ही नहीं है. फॉर दैट ओनली वी मेड दिस टेक्निकल क्वेरी, जहाँ पे आपको बस जो स्टॉक्स है वो फिल्टर होंगे, आपको इस क्वेरी में लाना है. यू हैव टू क्लिक लाइव क्वेरी एंड इट विल गिव यू लाइव रिजल्ट्स. whenever a 15 minutes candle close, it will automatically show you the all candles which are satisfying as per this criteria. Okay, so this is the Bandhan Bank condition. Now this is in feed. You can see I have written buy SL. So here you can see this is the condition. On 16th, this candle satisfy the condition, all the five condition. This is crossing the previous day high. Also at the same time, it's a strong candle. It's above 100-day adapting moving average. Also a day high, and also we can say it's a strong candle and open low. So this candle satisfy all the condition, but it didn't succeed it. अगर सक्सेस नहीं मिला तो मे बी पॉसिबल. सो यू कैन सी विल टेक दैट लो एज अ स्टॉप लॉस एंड 1767.35 जो भी है वो हमारा स्टॉप लॉस है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. सो दिस इज अ स्टॉप लॉस स्टॉक. नाउ द लास्ट एग्जांपल इज नाम इंडिया. Okay, so this is a condition which fulfill on 18th, and you can see this candle fulfill all the five conditions. We have to take an entry when this candle low break. Okay, so we have to take this high as a stop loss. 418.25 जो है वो हमारा stop loss होगा, and the low is 413.10 जो कि हमारा entry point होगा. And when this low breaks, we'll take entry. Okay, we can easily take the 5 rupees from this trade, and जो 413 पे जो entry मिला उसका भी जो है ये जो weekly support जो है वहां पे we can exit. Okay, but if someone who wanted to trail, he can book more because he is ready to take more risk. Okay, so he might exit at, suppose if I take exit at 315, so he can exit at 402.80. So higher the risk, higher will be the reward. But always first try to book for 1:1. Okay, so this is how you can use this intraday strategy. For that, you can call on our support number. Okay, you can call on this landline number 022-3501-8383, or you can WhatsApp on this number. So we'll share you the query, and yeah, for that overview, if you want it, I'll give you the overview. But yeah, till then, thank you for attending webinar, and see you on next Saturday with different topic.